Welcome to Safety Shots, the series that we are doing, and today's topic is on planning a mock drill. Now, we in the last video talked about firefighting, that is basic firefighting with portable fire extinguisher. Today, we are going to talk about planning a mock drill. Now, whenever we talk about a fire mock drill, we always see people standing with a fire extinguisher, burning a small fire and extinguishing it with whatever means, right? Now, in large industries, we see people, carrying people, sometimes instructions how to hold, fire hose and trying all sort of like wet and dry drills for fighting fire. Now, often question comes, is it the right way? Don't we miss something? Or have we actually done enough? Yes, that's the correct question. Now, mock drill planning, whenever we are planning a mock drill, what we are supposed to do, in today's safety short video, we will try and discuss the same. So planning a mock drill, what we do. So basically, जब हम लोगों ने अभी तक देखा कि भी हम लोग पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे फायर फाइटिंग करते हैं, सो ज़्यादातर आज का जो वीडियो है हमारा, वो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं प्लानिंग अ मॉक ड्रिल। तो मॉक ड्रिल होता क्या है? ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, भाई फायर का मॉक ड्रिल करना है, हाँ चलो भाई छोटी सी आग लगा लो, उसे फायर एक्सटिंग्विशर ले आओ, ये एक्सटिंग्विशर ऐसे चलता है, पास का प्रिंसिपल हो गया और ये इसको एक्सटिंग्विश कर दिया। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि पास का प्रिंसिपल जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फायर, जैसे सॉलिड फायर्स है जहाँ पे चीज़ें इधर उधर नहीं जाने वाली हैं, फैलने वाली नहीं है, या इतनी छोटी नहीं है कि उड़ जाए, तो ऐसी जगह पे तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे ये प्रिंसिपल्स काम नहीं आते हैं। और ज़्यादातर जब हम लोग मॉक ड्रिल के बारे में बात करते हैं तो हमें हमारी सोच क्या होनी चाहिए, भाई हमारी रियल लाइफ सिचुएशन कैसे होने वाली है, कहाँ पे ऐसी छोटी सी जगह पे आग लगी होगी जहाँ पे आप अच्छे से फायर एक्सटिंग्विश कर लेंगे। सो ये चीज़ें सोचने वाली है। तो क्या हम लोग अभी तक जो मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं या जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ चीज़ें भूल गए हैं या कुछ चीज़ें हमसे मिस हो रही हैं? तो हम लोग उसको ही आज रिवाइज करेंगे और इसी बात को लेके हम लोगों ने ये सेफ्टी शॉर्ट वीडियो बनाया है, जिसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे प्लानिंग अ मॉक ड्रिल के बारे में। तो आइए देखते हैं। So when we say that we are going to plan a mock drill, so planning a mock drill, let's see first the broad objectives of a mock exercise that we call it, right? Now first, let us quickly read the objectives first. To identify the gap in resources, manpower, communication and in any other field, work or job. किसी भी तरह के मॉक ड्रिल के लिए सबसे पहले हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई गैप इन रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अंदर क्या गैप्स हैं, मैन पावर के अंदर क्या गैप्स हैं, कम्युनिकेशन के अंदर क्या गैप हैं, या कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर हम लोगों को यही तो चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारी रिसोर्सेज कहाँ हैं, हमारी मैन पावर कहाँ है, कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, और वो कहाँ, जिस एरिया में आप काम करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ मत करिए, एक छोटा सा एरिया क्रिएट कर लीजिए अपने कार्य क्षेत्र के रूप में कोई भी, एंड देन यू प्रिपेयर अ मॉक कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, चलो अभी इसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। करेक्ट? तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में गैप्स कहाँ हैं। करेक्ट? या हमारे जो कहते हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस में गैप कहाँ है। करेक्ट? दूसरा आता है टू जनरेट अवेयरनेस बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मतलब अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसके इन्वॉल्वमेंट से? स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे हैं, नॉट ओनली द ऑफिस पीपल बट द पीपल इन द प्लांट। करेक्ट? तो आप जहाँ काम कर रहे हो, हर इंडिविजुअल जहाँ पे काम करता है उसके हर जगह के इंडिविजुअल एक हजार्ड्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हुए, एंड देन व्हेन वी सी दैट ओके whether we have identified the identified correctly or not, and how it is going to affect us. Then third is to enhance the ability to respond faster in case of emergencies. मतलब हमें हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें इतना एनहांस करना है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो फास्टर हो। वी हैव टू एनहांस आवर एबिलिटीज़। यस। इसके बाद में आता है चौथा पॉइंट जो कि है
रिव्यू डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। भाई हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, भाई वो प्लान सही मायने में प्रैक्टिकल है भी या सिर्फ प्लान डॉक्यूमेंटेड है? So we must review that what is our disaster management plan in case of any disaster so happening. So what is the disaster management plan? Secondly, we evaluate the disaster response plan. मतलब हम ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जिसके अंदर चेन ऑफ कमांड्स होंगी, किस तरह से हम लोग उसे रिव्यू करेंगे कि भाई ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है, वेदर चलिए हम लोग इसको फॉलो करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। So that is what disaster management plan is all about. And then evaluate the disaster response plan. वो होता है response plan को जब आप करते हो तो that means आप किस तरह से उसे mitigate करने वाले हो, किस तरह से उस तक पहुंचने वाले हो, किस तरह से उसे address करना हो, that is the response. How you are going to respond. So when you are going to evaluate your response plan, correct? Then sixth point comes to identify the efficiency of your SOPs. That means you're going to identify that okay, we have made this SOP. Now let us try and understand that okay, we will do step by step. Whatever this SOP says, we will follow that. And when we follow that, whether that SOP is actually related to it. So see, here we are planning a mock drill. Mock drill is not only limited to fire. No, no, no. It can be of anything. Any SOP that you have made is to be, reviewed. It's to be identified with its efficiency. Okay, let us see if this guy is not there, if the operator is not there in emergency, if we have to operate this, so we should be aware, na? Okay, so how we will work on it? We must follow a systematic SOP. So that SOP is so made. Let us try and follow them, and let us see what the result comes to. Correct. Now coming to the seventh point, and that is to highlight the roles and responsibility of various stakeholders. That means we must first understand that who are the stakeholders, how will they respond, whose responsibility is this, how will the chain of commands be, and how finally it will be addressed. So we must understand the roles and responsibility of each individual present in the premises and who is going to do what. आपको ये तो पता होना चाहिए ना कौन क्या काम करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई लश्कर कहाँ लड़ रहा है आपको पता भी है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं, किसको क्या काम करना था और उसने अपना काम किया या नहीं किया। इसे आप इवेल्युएट कर लीजिए या इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए या आप उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हाँ ठीक है ये हुआ था, आप लोग सबने अपना अपना काम किया, यस ओके ठीक है चलिए ये हो गया परफेक्ट। And last but not the least, enhance the coordination among the emergency response या emergency support function and of various stakeholders. So that means हमें जो emergency responders हैं, emergency जो लोग handle करने वाले हैं, उनका support function और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके support function को in sync लाना है। मतलब हे वायर्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को पता चलना चाहिए भी हाँ हम लोग ये करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ठीक है चलिए। हम लोगों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ या नहीं हुआ और हमारा टाइम कितना लगा, समय, तो इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। सो some of you will be aware of the concept of preparedness, response, mitigation and recovery, correct? अब ये तो preparedness, response, mitigation and recovery बड़े 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 शब्द हैं, लेकिन इसी को हम लोग जैसे बचपन में कैसे समझते हैं मॉक, तो चलिए मॉक का मीनिंग बनाते हैं। सो मॉक का मीनिंग है माइंड, ऑर्गेनाइज, क्लॉक एंड नॉक, सिंपल। सो द प्रॉब्लम, correct? So understanding mock is simple if you are able to imitate real life situation, only then it's mock. So mostly identifying your area, its concern and limitation, your movement which is restricted, and how effectively we will be able to work with those restrictions is important. Now let us see one by one mock. So mock में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं, हम लोगों ने मॉक का ना एक सिंपल वर्ड बना दिया। जैसे ये तो बड़े बड़े शब्द हैं, प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, मिटिगेशन एंड रिकवरी, ये बड़े बड़े शब्द हैं। इसको छोटे शब्द बनाते हैं हम लोग मॉक। मॉक मतलब एम से स्टैंड करता है माइंड, ओ से ऑर्गेनाइज, सी से क्लॉक एंड के से नॉक द प्रॉब्लम। चलिए अब जब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एरिया कैसा है, हमारा काम करने का कार्य का क्षेत्र किस तरह का है।
So when we say that okay, our work area is like this, so we will work in a particular pattern, इस तरह से हमारे पास में limitations कहाँ है भाई, यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, हम कैसे मूव करेंगे। तो रियल लाइफ सिचुएशन की एक फोटोग्राफ लीजिए, एक जमीन के ऊपर उसको ड्रॉ कर लीजिए और उसे बोलिए कि भाई यहाँ कुछ हुआ है, अब इसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, इसे यहाँ से निकालोगे कैसे। तो आप जब रियल लाइफ सिचुएशन में उसको निकालने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि हाँ हम लोग यहाँ से निकालेंगे। या आप अगर कर सकते हैं तो कार्य जहाँ पे आपका काम कर रहे हैं वहीं करके देखिए कि भी इसे रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। करेक्ट, एसओपीज प्रॉपर फॉलो हुई या नहीं हुई, कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई। तो ये चीज़ों के लिए आप मॉक जब प्लानिंग करते हैं तो एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए कि वो आपको ऑब्जर्व करे कि भी हाँ हमारी एसओपी क्या फॉलो करनी थी। तो जो जो चीज़ें हमें फॉलो करनी थी, जो हर आदमी को जो चीज़ें फॉलो करनी थी, जितने आदमी आपके काम कर रहे हैं उतने ही सामने ऑब्जर्वर होने चाहिए कि भाई इस आदमी ने काम सही किया या नहीं किया, इस आदमी ने काम सही किया या नहीं किया। ओके, देन यू आर एक्चुअली सही मायने में आप अपने आप को रेटिंग दे रहे हैं। और माइंड, सो हम लोग जब माइंड के बारे में बात करते हैं, ये आई होप दैट यू आर गेटिंग अ ग्रिप ऑफ इट, दैट पुटिंग माइंड इन मॉक। So that means identifying, how we have, how we'll identify. First comes the identification. So how we'll identify? We have a lot of documents, right? We have HERA document, we have HAC, that is hazard area classification, hazard identification and risk assessment, and some technical documents like HAZOP, hazard and operability study, then SIL, that is safety integrity level or system integrity levels, or LOPA documents, that is layer of protection documents, then CAPA documents, corrective action and preventive actions. So all those documents are there. So we understand them. Now to understand them is very important. Now identify each hazard that possesses a specific risk and mock it, and see how how it goes actually when we say that it's identified. Now in this, each individual player set role. Now creating a mock means understanding step by step the involvement of the SOP procedures, whether they are practically applicable or not, and change them accordingly. So primarily when we say that we are an ISO company, or we are, we are looking at all these documents, so what we do, so we must first understand that whether the so-called documentations are made as per the actual condition or not, whether it is practical or not. Okay, यहाँ तो यही step लिखा है sir. So now what you will do? You will do this. Okay, let us do this. Then what happens? So half of the things when it is not written on a document, that means, sir, I'm stuck here. I cannot move forward. Why? Because this says only this much. What more? So what more is missing? You will be at least able to identify, yes, this is missing, let us fill this gap. So this is how we fill the gap. Now coming to the second part of it, mock, and that is organizing mock. So when we say organize mock, means we understand or imitate a real life situation in open area, or imitate at your site, and try to see in which direction we go, how the response time and how mitigation measures will come or will work, and how you will respond to the coordination created, or how you will respond to the conditions so created. So this is what organizing is all about. I mean, that means, plan, do, check, that. Okay, we are doing this. So how we are organizing? We are organizing it step by step. So we are understanding, okay, this is happening, this is happening, this is happening, right? Now, the third element, that is clock. So when you say clock the mock, we must see our response time, if it's acceptable, or how we can improve the response time. This part is very important. If you have not responded in time, it means, now take an example. We are taking an example based on fire load calculation. We must understand how much loss would happen. That means, like if we know how much fuel is present, so if there is fire, so how much fuel will burn in 1 minute of time, and if your response is delayed by 5 minutes, so how much fuel or how much energy will be generated, which will lead to what kind of severity or what kind of serious impact, how much will be the severity of the loss, how much loss will occur, that you will be able to identify under mock. And finally, knock the problem. That means problem by mock.
That means once we have understood the problem and taken a note that yes, mock is so created, practical enough, it requires review and practice to ensure to reduce it by continuous practice, and people will become more aware of the problem and will be effectively be able to address the problem. So this becomes very easy now that we have understood, where we have put right mind to it, we have organized it properly, we have clogged it. Now what you need to do is need to knock the problem. So when we say we have to knock the problem, that means that what we are going to do, we are going to keep this cycle of learning repeatedly again. Okay, how much we have made this document, so how much people are aware of it, and then this cycle is repeated again. So again the mock is repeated. So area wise you can create this, and you can have the right set of examples to it. So I hope that you have liked the video, and we will conclude this. This is safety short. You have to understand, we have to keep things in as much short as much possible. I hope I was able to contribute well to it. Like I said, safety shorts, the series, we will continue focusing on small videos on safety. And thank you very much, friends, for all your support. Keep liking and sharing, and do not forget to subscribe our channel for our motivation. Thank you very much, friends.